Okay, students, good morning. So today your topic is formal letter and application. As you can see, formal letter and application. Application is a part of formal letter. So what is the meaning of formal letter? Today I'll teach you two formal letters, and another day I'll teach you two more formal letters. So what is the meaning of formal letter? Once you write a letter to the teacher, principal, class teacher, counselor of the municipality, doctor, or other person with whom you actually maintain a formal relation. Means the person must not be your parents, your friend, your relative. Sometimes once you write a letter to the editor of the newspaper, that letter is also a kind of formal letter. तो अखबार के जो संपादक होते हैं तो उनको भी हम लिखते हैं एप्लीकेशन, ये पत्र लिखते हैं, that is also a kind of application. So topic number 1 I am starting as well. I will write the question, then I will write the whole format. Okay. So first I am writing the question. You also write the question, all of you. Question number 1. See, I think you know very well that sometimes your name is given. For example, your name is Sumit. Write a letter to this person. Sometimes your name may not be given. अगर नाम दे रखा हो तो उसका ही यूज करना है, अगर नाम नहीं दे रखा है तो उसका you have to write your own name, or you may write any other name as well. Okay, so first I am writing, write an application to the principal of your institute. Write P, block letter, to the principal, PAL. Okay, PLE उसका मतलब होता है नीति, principal of your institute, requesting him, उनको request करते हुए, requesting him or her as well, whatever, requesting him for the arrangement of extra classes, for the arrangement of extra classes. So this is the topic. Here I did not give any name, तो मैंने बच्चे का नाम नहीं दिया है. So you may write any name as well. So first what you have to write, extreme left क्या लिखना है, your address. You are writing the letter. So जो application लिख रहा है तो उसका खुद का address. No meaning that you have to write your original address. You may write any imaginary address और काल्पनिक पता. Okay. So left hand side पर क्या लिखेंगे? Write down 17 Station Road is block letter and R block letter as well. 17 Station Road, Sikar, comma, Rajasthan S and R block letter. Today's date. Okay. So I am writing 13th July 2020. It is your own address. After that leave one line, एक line या space छोड़ दो. Okay. Then you are writing the letter to the principal. So you have to write to the principal, Prince School, Sikar. एक line छोड़ने के बाद. Okay. Prince School P block letter, School S block letter, एक साथ लिखते हैं कॉमा डाल के, Sikar S block letter. So that means you have already addressed the person. Okay. इसके बाद क्या लिखेंगे? Again you may leave one more line, और एक line छोड़ते हैं और नीचे लिखेंगे पेज का जो मिडिल होता है, तो at the middle of the page you have to write subject. Formal letter subject is compulsory. In many books, in few books you may not find the subject. आजकल जो बुक छपी जाती है उसमें सब्जेक्ट नहीं डालते हैं, but remember it is compulsory because the person with whom you are maintaining a formal relation may not have enough time to read the full letter. So in that case the person will read the subject and उनके समझ में आ जाएगा कि आपकी चाहत क्या है. Okay. तो subject, arrangement, I am writing A in block letter, arrangement of extra classes, underline. Okay. It is all about subject. After that you have to write from here only. इसके नीचे लाइन छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है. If you want you may leave, there is no hard and fast rule as well. So write down
already you have written all the things. Okay, so now write down I, then write your name. Okay, no name is given. Rahul, R block letter, Dubey, D block letter, comma. See, there are many ways of writing. If you follow various books, several books, you will find different ways of writing. अलग अलग लिखने के तरीके होते हैं. Okay, so here I am mentioning the name directly because the teacher, I mean the principal sir or ma'am is supposed to start reading from here sometimes. तो जो नाम है तुम्हारा उससे पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि किसने एप्लीकेशन लिख रखी है. राइट, तो राहुल दुबे कॉमा a student, definitely a small letter, of class 8 of your reputed means प्रसिद्ध. ओके, जिसने पहचान बना रखी है, दैट इज द मीनिंग. इंस्टीट्यूट, reputed institute would like to draw, खींचना, your kind attention regarding the fact that, okay, regarding the fact that, after that I am erasing, but you have to write below. इसके नीचे ही लिखना है, but I have to erase the board. Regarding the fact that the, उसके बाद में that के बाद, ठीक है, the syllabus of, you may write for as well, Hindi, comma, English and science, you may write as block letter, small letter, doesn't matter, but here Hindi and English, these two words are the names of two languages. तो लैंग्वेज का जो फर्स्ट लेटर होता है उसे ब्लॉक में लिखते हैं. इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश एंड साइंस. is not, I'm using very easy language. I would have written has not been, but I am using very easy language. Is not completed yet. Due to few holidays. Don't say holidays, holidays, say holidays. Holy day means Pavitra Din. That is HOLY, holy. It is Holi, HOLI. Okay. Due to few holidays in the institute and absence of the teachers, rarely means the teachers were absent very rarely. Overall there is no particular reason, due to holidays, due to slow way of teaching, and due to sometimes the absence of the teachers, the syllabus is not yet completed. Okay, of the teachers, rarely, comma, the syllabus has not yet completed. %70 of these, plural number, subjects, this, these, that, those, you know very well. 70% of these subjects has yet been covered. Has yet been covered. Okay, so now I am erasing this part as well. It is first paragraph. You have talked about the problem. तो problem क्या क्या हो रही है. Now you have to talk about a solution, few solutions. Okay, next paragraph. So you should start writing from the middle of the page. Next line, don't leave any line. I am afraid
the exams, or you may write examinations, the examinations are नजदीक आ रहे हैं, तो you know that knocking at the door, खटखटा रहे हैं, that is the meaning. are knocking, K-N-O-C-K, knocking at the door. Therefore, it is our request to you, to arrange extra periods for the aforesaid, जिसके बारे में पहले ही कहा जा चुका है. aforesaid, AFORESAID एक साथ लिखना है. aforesaid subjects. We are ready to devote extra time, means the classes may be arranged within the school hours, before the school hours, or maybe at the time of assembly, or maybe after the school hours. तो हम सारे तैयार हैं एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए. That is the meaning, right? Devote का मतलब होता है त्याग, नहीं होना, very well. So we are ready to devote extra times apart from school hours. Apart from school hours. Last sentence. We shall be highly obliged. Obliged का मतलब होता है कृतज्ञ, आभारी, धन्य, right? Thankful, grateful, they are the synonyms. Highly obliged if you, तो if you इसके बाद future tense नहीं आएगा, present में लिखना होगा. If you then present tense, right? If you will नहीं होगा. Kindly look into एक साथ लिखना है. look into का मतलब जांच करना, right? into the matter, छानबीन करना, and take necessary steps, and take necessary steps very fast, jaldi. Okay, so the letter is complete. Now you have to say, you know very well. एक line छोड़ दो, leave one line and then write yours, Y-O-U-R-S, yours sincerely, and then your name. Okay, so here already you wrote your name, Rahul Dubey. Now if you again want to mention, then you may write class 8. That's it. Okay, तो yours sincerely लिखना है. yours apostrophe नहीं डालनी है, y block letter, इसके नीचे पूरा नाम लिखना है. You have to write the full name, नीचे class डाल दो. So your first letter is complete. Okay, so yours sincerely, you may write yours obediently as well. It is all about your first letter and first application. Now I'll start the second application. Okay, so I am starting to erase from here as well. So it is question number 2. Write a letter to the editor of an
English e-block letter and English news daily यानी न्यूज़पेपर informing him the conditions of the badly damaged roads। तो जो रास्ता है वो रास्ते की कंडीशन बड़ी खराब हो चुकी है, राइट। सो कंडीशंस ऑफ द बैडली डैमेज्ड रोड्स इन योर लोकेलिटी। तो उनका ध्यान आकर्षित करना है, और जो पढ़ने वाले हैं तो पढ़ेंगे, और जो सरकार है तो सरकार की तरफ से कई रीडर्स भी पढ़ेंगे, एंड देन द गवर्नमेंट विल अंडरस्टैंड, दे विल रियलाइज what is the actual problem, right? So in this manner, through the newspaper, you want to draw the attention, the kind attention of the representatives of the government. Okay, so damaged roads in your locality. It is a question, so now I am starting to write the answer. फर्स्ट राइट ऑन योर एड्रेस, राइट, जो चिट्ठी लिखता है उसका एड्रेस 17 स्टेशन रोड सीकर राजस्थान ASNR ब्लॉक लेटर। देन टुडेज डेट 13th जुलाई, यू में अंडरलाइन, देन लीव वन लाइन, एक लाइन छोड़ देते हैं, देन टू the editor e block letter t block letter to t the t and editor e block letter editor. It is given very clearly that English newspaper, so you must write the name of an English newspaper, Times of India, Hindustan Times or Asian, so many newspapers are there. The Times of O small letter, preposition है इसलिए preposition article जब heading लिखते हैं तो हेडिंग में जो प्रीपोजिशन और आर्टिकल जो भी आ जाता हो तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसे हम स्मॉल में लिखते हैं, बिकॉज इट इज अ प्रीपोजिशन। ओके, टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड दिस न्यूज़पेपर इज नॉट पब्लिश्ड फ्रॉम सीकर, सो राइट डाउन द कैपिटल, दैट इज जयपुर, जे ब्लॉक लेटर। तो जयपुर से जो अखबार निकलता है तो उसमें ही सारे शहरों की खबरें भी छपी जाती है, ऑल द न्यूज राइट फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट एंड मेनी सिटीज एंड टाउन्स एंड विलेजेस, I mean is published as well. Jaipur. Now you may write comma Rajasthan. Okay, इसके बाद क्या करना है, लाइन छोड़ते हैं, राइट, लीव वन लाइन, सब्जेक्ट you may write SUB only. Badly damaged roads इन कहां पे लिखना है, पेज के मिडिल पर लिखना है, राइट, यू हैव टू राइट एट द मिडिल। बैडली बी ब्लॉक लेटर डैमेज्ड रोड्स इन सीकर, एस ब्लॉक लेटर, सीकर क्या है, ये प्रॉपर नाउन है तो इसलिए एस ब्लॉक में लिखना है। इट्स ऑल अबाउट योर सब्जेक्ट एज वेल। इसके बाद दोबारा लाइन छोड़ देंगे, इफ यू वांट यू मे लीव, यू मे नॉट लीव एज वेल। नाउ यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट, बट हियर आई हैव टू यूज okay. Now write down I'm using the same name, Rahul Dubey. You may not mention your name as well, there is no hard and fast rule, but sometimes I prefer mentioning the name at the top, okay, so that the reader understands what the name of the person is. Sometimes the readers are very much interested to know the name, that is the case. I, Rahul Dubey, a citizen of Sikar, S block letter, comma, ward number, W block letter, WARD, ward number 20, would like to express my concern
इट्स अनदर वे ऑफ राइटिंग। मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूं मेरी जो कंसर्न है उसको, बाय कंसर्न, थ्रू के माध्यम से, के जरिए, THROUGH, थ्रू योर एस्टीम्ड मीन्स वेरी फेमस, ESTEEMED, थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज डेली। ओके, इट गोज विदाउट सेइंग, तो इसे बताने की कोई जरूरत नहीं होती। दैट इज द मीनिंग इट गोज, इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेज इन इंग्लिश। इट गोज विदाउट सेइंग दैट द current states, state means halat, condition, the current states of most of the roads in the education city Shiksha Nagari, right? The education E block letter within, you have to write within I mean inverted comma as well. So roads in the education CTC block letter of Sikar. It goes without saying that the current states of most of the roads in the education city of Sikar, you wrote states, तो जो verb आएगी तो इसके साथ correspond करेगी, right? तो the verb will correspond to this particular word. That's why you have to use are, because plural number, that's why states are extremely pathetic, शोचनीय। There are big holes, cracks, there are everywhere, एक साथ लिखना है, causing the situation out of control, तो situation कंट्रोल के बाहर जा चुकी है। ओके, causing the situation out of control, CONTROL, due to the uses of plastic bags, तो प्लास्टिक बैग्स की वजह से, राइट, द ड्रेन्स, जहां से पानी, गंदा पानी बहता है, DRAIN, द ड्रेन्स हैव ऑलरेडी बीन क्लॉग्ड, CLOG, क्लॉग का मतलब होता है पूरी तरह बंद कर देना, उसको रोक देना। तो यू आर यूजिंग थर्ड फॉर्म हैव बीन पैसिव वॉइस, तो क्लॉग्ड CLOGGED, क्लॉग्ड मीन्स ब्लॉक्ड। ओके, बैग्स, देन गिव अ कॉमा, स्मॉल कॉमा, द ड्रेन्स हैव ऑलरेडी बीन क्लॉग्ड आफ्टर अ 5 मिनट शावर। अगर 5 मिनट बारिश होती है तो 5 मिनट, डोंट राइट मिनट्स, बिकॉज हियर 5 मिनट शावर, यू आर यूजिंग 5 मिनट एज एन एडजेक्टिव, इसमें एस नहीं डालते हैं। अब 5 मिनट शावर, बारिश, के डर्टी वाटर, तो गंदा पानी ये उमड़ता है, राइट, डर्टी वाटर ओवरफ्लोज, एक साथ लिखना है, एंड द रोड्स बिकम इनंडेटेड, INNUNDATED, इनंडेट का मतलब होता है मैरून, मीन्स पानी से भर देना। तो रास्ते इनंडेटेड है का मतलब होता है पूरी तरह पानी भरा हुआ है, दैट इज द मीनिंग। ओके, तो द रोड्स बिकम, बन जाते हैं, इनंडेटेड, INNUNDATED। अगेन आई एम राइटिंग फॉर योर कन्वीनियंस।
INNUNDATED. सेवरल, तो रास्ते पे बड़े गड्ढे भी हैं, राइट, इसलिए गाड़ी भी पलट जाती है, गाड़ियां. सेवरल केसेस ऑफ एक्सीडेंट्स हैव ऑलरेडी बीन रिपोर्टेड. तो एक्सीडेंट की खबरें रिपोर्ट हो चुकी हैं, राइट. एक्सीडेंट्स हैव ऑलरेडी बीन रिपोर्टेड. लॉस ऑफ लाइफ, एक दो व्यक्तियों की मौत भी हो चुकी है. लॉस ऑफ लाइफ has also taken place. It's all about the problem. Okay, now you have to seek a solution. SW के seek मांगना, तो here you are supposed to seek solutions for these problems. So you are supposed to write from a new paragraph. कहाँ से लिखना है? पेज के मिडिल से ही लिखना है. तो start writing from the middle of the page. No need to leave any line. Therefore, comma, I hereby, एक साथ लिखना है hereby, स्पेस नहीं देनी है. I hereby like to draw your, see, once I started writing the letter, I didn't write that I would like to draw your kind attention. तो इस लाइन को मैंने नहीं लिखा था, तो अब हम इसे लिख सकते हैं, राइट. सो आई हियर बाय लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स, और यू मे राइट टू एज वेल, टूवर्ड्स दिस क्राइसिस, CRISIS, दिस क्राइसिस और दीज क्राइसिस. यू लर्न, जो प्लूरल नंबर होता है क्राइसिस का, दैट इज क्राइसिस, CRISES. तो अगर उसे लिखोगे तो दीज लिखना है THESE, दिस क्राइसिस एंड, ओके, गिव अ फुल स्टॉप, स्टार्ट अ न्यू सेंटेंस. इफ यू काइंडली publish this news or get the news published, kindly publish this news, it may, तो after that you have to write continuously. I am writing here, मैं ऊपर लिख रहा हूं अभी. Okay, so publish this news, it may capture, पकड़ना, the heed, I am not repeating the same word, that is attention. attention का जो दूसरा सिनोनिम होता है that is heed, HEED. heed का मतलब होता है ध्यान और attention. okay, so it may capture the heed, HEED. heed of the government, of the representatives of the government. प्रतिनिधि, representatives, TATIVES, write very carefully, don't miss out any letter, क्योंकि बड़े जो शब्द होते हैं उन शब्दों को जब हम लिखते हैं तो कई बार एक दो लेटर भी मिसिंग हो जाते हैं, राइट. बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू शुड नॉट मिस आउट एनी लेटर. कैप्चर द हीड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, or you may write the government's representatives of the government. G block letter I wrote here. Nowadays in modern English small letter is used. I think I told you for the word God, for the word government, G should be written in block letter. Okay,
but nowadays in modern form of the language people don't follow. But remember, I always block letter, हमेशा block letter में इसे लिखना पड़ता है. Okay, of the government, I am quite sure, मैं काफी निश्चित हूं. I am quite, QUITE, quite sure, solutions to these problems are only a matter of the moment. एक लम्हे का इंतजार है, that is the meaning. If all the people read, if the representatives from the government read the letter properly, and if they really want to take a few initiatives to sort out the solution, it's a matter of 1 minute only. Okay, so only a matter of the moment. I hope, comma, it will spread a message, MESSAGE, okay, spread a message, ME, please by mistake don't write MA, तो ये क्या बनेगा, मसाज हो जाएगा. Spread a message of awareness, जागरूकता. So your letter has ended here. तो क्या करते हैं इसके बाद, you have to leave one line and कहाँ पे लिखना है, एक्सट्रीम लेफ्ट पर लिखना है. तो क्या लिखोगे, अगेन आई एम टेलिंग यू, एक लाइन छोड़ने के बाद, योर्स वाई ब्लॉक लेटर, एस विदाउट एस इट इज रॉन्ग, नो एपोस्ट्रॉफी, नो एपोस्ट्रॉफी, आई एम रिपीटिंग अगेन, हियर आई एम राइटिंग योर्स सिंसियरली, देन आई मेंशन द नेम Rahul Dubey, so Rahul Dubey. R block letter, D block letter. You may give this dash. After that, if you want, you may give a signature. There is no hard and fast rule. अगर चाहोगे तो एक signature भी डाल सकते हो. The way you give your signature. So it is not mandatory. So I am writing like this. Okay. It is not compulsory. Again I am telling you. Because once the letter is published, that time your signature will not be published. इसे पब्लिश नहीं किया जाएगा. It will be given up to this in the editorial page of the newspaper. The letter will be given up to this, and if there is any grammatical mistake, it is a right of the editor to get it corrected. उसमें अगर कोई गलतियां हो जाती हैं तो ये अखबार जो संपादक महाशय है तो उनका ये अधिकार है उसे चेंज करने का. तो डेफिनेटली he or she will make a few changes. Okay, it's all about your second application. तो already I have taught you two letters or two types of applications. The first one is a pure application because you are writing the letter, the formal letter to the principal, so it's also a kind of application. Second one is formal letter, mainly kind of application, because ये जो लेटर होता है, मतलब इस तरह के जो लेटर होते हैं तो इन्हें यूजुअली हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं. एप्लीकेशन का मतलब होता है जब हम कुछ एक लेटर लिखते हैं, एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं और उन्हीं के लिए लिखते हैं जिन्हें हम जानते हैं. That is application. Okay, here this person, I mean the editor of the newspaper, you do not know. तो वो कौन है, उन्हें हम जानते भी नहीं है, बिना जाने हम चिट्ठी लिख रहे हैं, right? So here it is not a pure application, but definitely it's a formal letter. So that is the basic difference between formal letter and application. Thanks for today.